Hello and welcome to Think Tax. Today we will discuss Section 222E of Income Tax Act 1961 जो बात करता है taxability of loan and advances given by a closely held company to its shareholders या ऐसी concerns को जिसमें shareholder substantial interest own करता है. I have made a flowchart to understand this section in a better way. Let us discuss it. अगर हम केस A देखें तो इस केस में क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन या एडवांस दे रही है ऐसे शेयर होल्डर को जो होल्ड करता है 10% और मोर वोटिंग पावर इन सच कंपनी. इन दिस केस द सेड अमाउंट ऑफ लोन और एडवांस विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स परचेस्ड बाय द कंपनी, और ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. केस बी में क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन या एडवांस दे रही है एक ऐसी कंसर्न को जिसमें 10% वाला शेयर होल्डर जो हमने केस ए में देखा था होल्ड सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द सेट कंसर्न जिसको लोन या एडवांस मिला है. अब कंसर्न की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा. कंसर्न मीन्स HUF और अ फर्म और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और अ कंपनी. ये सारे पर्सन इसमें इंक्लूडेड हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट इज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट. Substantial interest for the purpose of Section 222 means a person shall be deemed to have a substantial interest in a concern if he is at any time during the previous year beneficially entitled to not less than 20% of the income of such concern. ये तो हो गया पार्टनरशिप का केस. अगर उस शेयर होल्डर का पार्टनरशिप में 20% या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट है या शेयर है इनकम में, या फिर इन केस ऑफ अ कंपनी the substantial interest has to be more than or equal to 20% of the voting power. केस बी के अंदर लोन और एडवांस shall be taxable in the hands of the concern which receives such amount. Now let us discuss केस सी. केस सी में क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन या एडवांस दे रही है एक पर्सन को ऑन बिहाफ ऑफ 10% वाला शेयर होल्डर. इन दिस केस द अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर. इन तीनों ही केसेस में फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबिलिटी dividend amount will be restricted up to the accumulated profits that are possessed by the company जो लोन दे रही है. परसेंटेज ऑफ वोटिंग पावर निकालने के लिए रेलेवेंट डेट क्या होगी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 222. इस केस में सेक्शन में लिखा हुआ है द रेलेवेंट डेट शेल बी द डेट ऑन विच द लोन इज गिवन. फर्दर इफ द कंपनी इज गिविंग द लोन और एडवांसेस देन इट इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS एट द रेट ऑफ 10% अंडर सेक्शन 194 ऑन द अमाउंट ऑफ डीम डिविडेंड. इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट बात है नोट करने वाली वो ये है, इफ़ द शेयर होल्डर रीपेज द लोन और एडवांस बैक टू द कंपनी सेक्शन 222 इज स्टिल एप्लीकेबल. नाउ लेट अस डिस्कस द एक्सक्लूजन्स, दैट इज द ट्रांजेक्शंस विच विल नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 222E. फॉर दिस देर इज अ बोर्ड सर्कुलर विच mentions certain illustrations which are not covered under section 222E basis various court judgments. This circular was issued in the year 2017. If we see the first transaction under para 2.1, it says advances were made by a company to a sister concern and adjusted against the dues for job work done by the sister concern. It was held that the amounts advanced for business transaction do not fall within the definition of deemed dividend under section 222E. So it is clear if the loan has been advanced for the purpose of business transactions, then it is not covered under section 222E. Let us see case number 2. इस केस में कंपनी ने शेयर होल्डर को लोन एडवांस दिया था फॉर सेटिंग अप प्लांट एंड मशीनरी एट शेयर होल्डर्स प्रेमाइसिस so that an export order can be completed. So this is a case of business expediency and not covered under section 222E. In the third transaction as well, you can see that the amount of security deposit has been given under a normal course of business. So this transaction is also not covered under section 222E. I hope you will find this information useful. In case you have any questions, then please mention in the comment box. Thank you.